एक बार आपको सक्सेस का नशा जो होता है ना, सक्सेस का वो टेस्ट जो है वो आ गया है. There are poor kids who crack this examination. When you earn power at younger age, at a tender age, you bring in a change. You can bring in a change in the way you cannot even imagine. Thank you everyone for gathering over here. And thank you very much for the brief introduction. It was very nice. Thank you. So today we are here for a seminar, and the topic of the seminar, as you are seeing over here, and that is beyond academics, why civil services and how to succeed in it, right? इस सेमिनार में आज जो मैं ऑब्जेक्ट आप लोगों के सामने डिलीवर करूंगा, द ऑब्जेक्ट दैट आई एम गोइंग टू डिलीवर इज basically what are the components of UPSC, what does it consist of, right? What are the stages, followed by is it worth trying for UPSC, and then we shall also see why should we choose civil services as a path. And the next that we are going to see is myths about UPSC examination. What are the myths? There are certain myths about every field that we are going to work in, right? So that also we'll see. We'll also see what are the reasons for people who succeed in this examination and what are the reasons for failure in this examination, right? So that also we'll see. Then we shall see recipe to succeed in this examination. What are the recipe? What does it take to succeed in UPSC? And then we shall see some do's and don'ts, and followed by how Forum IAS will or can help you in your preparation or in your UPSC journey. So this is the brief objective that we shall fulfill in coming 90 minutes or so, right? One of the IAS officer, that is Divya Shakti, she is having an urgent meeting with the commissioner in Patna, and that is the reason she is running a bit late. She'll join us by 7 p.m. or so. So after that, she'll also have few words with you all, right? So these are the objects and the things. Before I proceed any further, I would like to introduce myself. My name is Sanjeev Roy, and I am Associate Director, as your colleague rightly mentioned. And insofar as my educational qualification is concerned, I have done B.Tech in Computer Science Engineering, of course not from IIT, right? You all have rocked it by getting a seat over here in IIT, right? I also once upon a time dreamt of it but couldn't succeed, right? And followed by MA. After that, I worked for 2 years in an American firm, that is Honeywell Technologies. I hope you have heard about it, or in future you may hear about it, right? And then I pursued MA in economics and followed by LLB from Delhi University. And insofar as my UPSC experience is concerned, I have given 6 attempts, out of which I have written 5 mains, appeared in interview twice, and I have 10 plus years of industry experience, 8 plus years of teaching experience, right? So this is a brief introduction about myself. Now, before I proceed further, engineers की बस्ती में आया हुआ हूं, तो I would like with Rahat Indori Sahab's शेर, I hope you would have heard it earlier. कहते हैं कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है, right? Yeah. I wanted this connection, and I knew this is the only line which can connect an engineer to other engineer, even in a dry state, right? Yeah. So, of course, we are going to talk some serious things,
but there will be humor involved throughout the lecture. And this is going to be an interactive session, all right? So everyone needs to participate in this session, all right? So first of all, I think you all must have heard about UPSC, and the UPSC consists of total 3 stages, right? One is preliminary examination, that is the first stage. The next is mains examination, and followed by interview, right? Or everyone of you must be aware about that. और अगर नहीं awareness है तो this is the 3 stage. Preliminary examination में MCQs पूछते हैं, that is objective questions. उसमें आपके सब्जेक्टिविटी के कोई स्कोप नहीं होते हैं. क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है, उसको आपको मार्क करना है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. The next one is mains examination, wherein subjectivity is involved. Your subjective interpretation of the questions is involved, and that is how you interpret the questions, right? And then you write the answers, followed by an interview, जहां पे आपके knowledge का टेस्ट नहीं होता है, आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है. हाउ बेटर यू आर एट योर पर्सनैलिटी और विद योर पर्सनैलिटी, दैट इज द सेकेंड थिंग दैट दे टेस्ट. तो ऑब्जेक्टिव नॉलेज आपका चेक हो जाता है, सब्जेक्टिव नॉलेज आपका चेक हो जाता है, और उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी की भी वेरिफिकेशन हो जाते हैं वहां पे. ऑलराइट, तो दीज आर द 3 stages. Now, why civil services? This is a very pertinent question that we all must address, right? So, anyone of you can answer why civil services? Yes. Your name, please. Yeah. Nitin. Why civil services? Why do you think we should pursue it? Yeah, you can hand over the mic if possible. बैठ करके भी आप कर सकते हो, बैठ जाए. हाँ. I will get chance to work for my country or society. Okay, good, fair enough. You? I am Anurag, and I think civil services in this line I will get chance to go down to earth to people and reach them and help them in their needs. Absolutely, absolutely, fair enough. You? हाँ, आप बता दो. I think it's a quite a nice experience. I will get to do new things and meet new people. Of course, fair enough. Social inclusivity. Social inclusivity, बहुत ही अच्छा phrase है. Nice, everyone, please for him once. For everyone, actually. Yeah. The green T-shirt, yeah. Work for the society. Work for society. Good, ma'am. Working for the Society. Okay. ये चीटिंग हो रही है लगता है. like to bring some change, we need power. So this is a way that we can bring change in the society. Beautiful. Everyone, please for her. What's your name? Isha Shah. Isha Shah. Okay. Fair enough. We are done. Right. So ये एक question था, and as we heard, right, everyone of them absolutely said the nicest thing, that they want to bring some change in the society, and that is the first point I wanted to cover. The first point of why civil services is that you can bring in the change in the society. You can actually make a difference. Do you realize that? Because, and that too, not from your pocket, not investing money from your home or family. You can use the resources of the state and bring in the change in society. You'll be paid. You'll be paid for the work you're doing, as well as applauded for the work you'll do. We know many of the IAS officer or IPS officers who are actually appointed for the job they are doing, and still we name them, still we applaud them in the way we do not applaud a private individual. Do we? We do not, right? You're all getting my point or not?
So this is one thing that you can bring in change in the society in the way, an impactful change, which no individual can even think of. You're getting my point? उसके लिए आप state के definition के under में आते हो, आप actually state कहलाते हो. You're getting my point? That is the first point I wanted to cover. The second thing is, you should not feel helpless at any point of time. Once you are into the services as an IAS officer, as an IPS officer, you wield so much of power. You are actually the person, वो corridors of powers जिसको कहते हैं ना, you are actually the one who belong to that power corridor, corridors of power. You are getting my point? So, feeling helpless is the worst feeling that one can ever have. Once you are into that peer group, you must know how much, connections they build. You're getting my point? So, that is the second thing that we need to understand, that power. You won't ever feel helpless in life. Because the next point will be that you will be rubbing actually the shoulders with the most powerful. Your peer groups will change. आप लोग अभी IIT में हो, तो जैसे ही आप IIT में आए, आपका पेयर ग्रुप चेंज हो गया ना. जो स्कूल में आपके पेयर ग्रुप में थे, उनमें से अपने स्कूल में से कितने लोग सेलेक्ट हुए होंगे आप लोग? 120 अगर बच्चे होंगे तो एक या दो का ही IIT में सिलेक्शन हुआ होगा, हाँ कि ना? बाकी लोग तो मतलब इधर उधर कहीं कहीं चले गए. आपका पेयर ग्रुप चेंज हो गया यहां से. नाउ यहां IIT में आने के बाद एक जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप में आएगा, उस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के तहत आप मतलब एक अलग डायरेक्शन चूज करोगे कि एक बार आपको सक्सेस का नशा जो होता है ना, सक्सेस का वो टेस्ट जो है वो आ गया है. नाउ यू ऑलवेज बी वांटिंग द सक्सेस इन योर लाइफ और लॉन्गिंग फॉर इट, और वो सफलता आपको मिलती है. एलुमनाई ऑफ IIT, आप लोगों ने लिस्ट देखा है, हर जगह रहते हैं. जो भी एक बड़ा जगह, मतलब मेडिकल फील्ड छोड़ करके, ऑफ कोर्स उसमें भी वो लोग जी हेल्थ केयर जो है उसमें जाकर के कुछ ना कुछ मशीन बनाते ही रहते हैं. सो इट्स ऑल, यहां से आपका ये पीयर ग्रुप जो है वो चेंज हो जाता है. उसी तरीके से वंस यू क्रैक UPSC एग्जामिनेशन, यू विल एक्चुअली बी चेंजिंग द पीयर ग्रुप. और पीयर ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में. यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, राइट? सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन. You're getting my point? You see Tina Dabi, you see Gaurav Agarwal sir. They are the ones, they interact directly. One IAS officer will join us also. So they are the ones to whom, the ministers, the leaders, the politicians call them directly. Nitish Kumar remains directly in touch with them. It's not Nitish Kumar, the chief minister. You're getting my point or not? Direct call aayega. And you are just 22, 24, 25. Can you imagine a life like that? Otherwise, it is not possible. There are so many individuals who are working in different fields, but none of them receives a call from a politician, a minister, a bureaucrat, senior bureaucrat. You are getting my point? So you see S. Jaishankar Saab. He was a bureaucrat, right? He was into that ministry for 35 plus years. And then he went on to become the minister of that ministry, right? So that also is a very important thing, right? Next one is that you can surpass the challenges. You are supposed to surpass the challenges, because there are persons with disabilities, there are poor kids who crack this examination. So even if someone is disabled, someone is poor, they also can crack this examination. This is such a egalitarian kind of examination. Equity.
One of my friend, Pranjal Patil, she had crashed, she is blind, and still she cracked this examination and secured rank in general category. And that matters, right? You can go and Google her, Pranjal Patil, you can YouTube her, right? Smriti Irani had went on to Lapsna to meet her personally, right? So that also becomes very much important for all of you, that you can surpass the challenges, crack this examination. उतना costly इसका वो भी नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, फॉर्म भी इसका बहुत चीप होता है ना? एंड उसके बाद तो आपकी सरकार खुद ही खुद ख्याल रख लेती है. You are all getting my point or not? So that's the next thing that I wanted to tell you all. And as per Winston Churchill, this is what he had said, that power should come when you are young. East India Company, though it's a negative example, still East India Company ruled us for years, right? They all had these young officers. They used to send young officers. Why? Because they have that dynamicity. With age comes wisdom, and with wisdom comes, gravity in your personality. You feel like, अरे ये करके आप वो कहते हैं ना कि system में रम जाओगे. When you are young, you are energetic, you are dynamic. You implement what you think of. Recently, I was watching a video of Tina Dabi. She is posted in Barmer district of Rajasthan. She is conducting some cleanliness drive in that district. One morning when she was conducting this drive, one of the spa owner shut his shop when he saw the DM coming. You all have seen that video? You have seen? Right? So she stood there कि अब तो मैं जाऊंगी नहीं, पहले गेट खोलो इसका. खोलना पड़ा. मैं और आप खोल सकते हैं क्या? सवाल ही नहीं उठता है. आपको क्या मतलब, चलो निकलो यहां से. She stood there, got the doors opened, and then she caught, there was sex work that was going on over there. You're all getting my point. So such kind of impact you can bring in a society. अब वो एक को पकड़ा है उनने, उनके हवाले जाने कितने लोगों को उस चीज से, सेक्स वर्क से रिलीफ मिलेगा एटलीस्ट. You're all getting my point or not? So when you earn power at younger age, at a tender age, you bring in a change. You can bring in a change in the way you cannot even imagine. You're getting my point or not? So that's the next thing. Everyone is getting what I'm saying or not? Clear है ना? सब लोग यही हो ना? मैं engage करने के लिए मेरे पास और भी शेरो शायरियां हैं. वो आखिरी नहीं था, पहला था, है ना? So आप लोग को बॉदर करने की जरूरत नहीं है. You will get it, right? थोड़ा सा कंटेंट के बाद you will get it, right? ठीक है ना? तो ये आप मतलब these are, वैसे reasons बहुत सारे हैं, but these are primarily the reasons as per me because of which one should pursue UPSC और Civil Services Examination. अब IIT में आया हूं तो Civil Services Examination का मतलब U लगा देना पहले. वो स्टेट पीसीएस को आप लोग मत बोल देना कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, करना भी मत. आईबीपीएस की प्रिपरेशन कौन कौन कर रहे हैं यहां पे? बैंक पीओ? एनीवन? नन, राइट? हाँ, तो स्टेट पीसीएस का भी नहीं करना है. कोई कर रहे हैं यहां पे स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन का? बीपीएससी, यूपीपीसीएस एंड बाकी सारे? No, I do not expect this of you all. An engineer from IIT must not pursue that, right? ठीक है ना? कोई दिक्कत? Next है कि is a UPSC worth it? Do you think UPSC is worth pursuing? Reasons? Can he have the mic, please? What according to you are the reasons or can be the possible reasons? It is only field, outperform yourself. Outperform? Yourselves. Okay, okay. Nice. Everyone please for him. What's your name? Vipin Kumar. Okay, good. Anyone else?
सबको अब डर लग गया कि माइक मिल जाएगा। नन। ओके, सो ये सवाल, और ये मैं हर सेमिनार में जहां कहीं भी जाता हूं मैं ये बात तो जरूर बताता हूं। गौरव अग्रवाल सर, हैव यू हर्ड अबाउट हिम? He is one of the UPSC toppers whom I respect and adore the most. You know, Gaurav Agarwal sir was an IITian from IIT Kanpur, followed by, अब IIT का वो लत लग गई ना, तो फिर IIM, फिर he pursued his MBA from IIM, and then he went on to, you know, work in a private bank, and he was placed in Hong Kong, right? So in Hong Kong, he shared this story. This is the question that was asked from him. तो जब हांगकांग में वो बैंक में काम करते थे, तो he was like कि मेरा इतना हाई राइज कार था कि जब हम लोग कॉफी लेकर के और विंडो से नीचे देखते थे तो बादल यूज्ड टू बी बिलो अस, बादल नीचे होता था, यू नो। जाकिर खान भी बोलते हैं कि बादल इंपॉर्टेंट है, नहीं? यू ऑल हैव हर्ड दैट बादल इंपॉर्टेंट है? हाँ, सो ही वाज ऑफ द व्यू दैट कि वो बादल नीचे होता था, इतना हाई राइज बिल्डिंग और हाई पैकेज जॉब एज वेल, बट ही क्विट इट। और क्विट करके और यूपीएससी में फिर वापस से आए, तो एक बारी आईपीएस बने और दोबारा वो एग्जाम में अपीयर हुए। ही बिकेम आईएएस ऑफिसर विद रैंक 1। 2013 के वो टॉपर है, रैंक 1 है, राइट? सो ही वेंट ऑन टू training, he received training, and then he got Rajasthan as his cadre. He was placed in a, you know, bordering district, a district that was bordering with Pakistan. अब सभी को पोस्टिंग मतलब जिला वो स्टेट कैपिटल में नहीं मिलेगा ना, कि जयपुर में, राजस्थान में मिला तो जयपुर, बिहार में मिला तो पटना, कटिहार भी किसी को जाना होगा, अररिया भी किसी को जाना होगा, नहीं? तो उनको भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट मिला। वहां पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ही वाज लाइक कि वहां पे लाइट नहीं रहती है बहुत टाइम पे, तो आप लोग को लगेगा जनरेटर, तो जनरेटर भी नहीं चल पाता है बहुत टाइम पे, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे वो डीजल चाहिए होता है ना, तो डीजल लाने के लिए आपको 100 किलोमीटर जाना होता है, तो बहुत टाइम पे जनरेटर भी अनअवेलेबल रहता है। और आप सभी लोगों को पता होगा राजस्थान की गर्मी किस हिसाब की होती है, और उनकी एक न्यूबॉर्न चाइल्ड भी थी उस टाइम पे, है ना? अभी तो वो कोटा के डीएम है। सो उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि यूपीएससी इज वर्थ ट्राइंग और वर्थ सक्सीडिंग इन इट? देन ही सेड कि यस, आई फील लाइक इट इज वर्थ सक्सीडिंग और वर्थ ट्राइंग। And the reason that he mentioned was like very nice, and that touched my heart. He was like कि जब मेरे ऑफिस में एक बुजुर्ग महिला आती हैं और वो मुझे अपने प्रॉब्लम से अवगत कराती हैं कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, या मेरा घर नहीं है, या जो भी है, और उस प्रॉब्लम को जब मैं एज अ डीएम रिजॉल्व करता हूं और जब मुझे वो आशीर्वाद दे करके जाती हैं, then I feel that it is worth it. You are getting my point or not? This is the kind of satisfaction, the job satisfaction that we talk about. This is the kind of satisfaction that you'll get into this service, right? So that's one example which says yes, it is worth trying, right? ठीक है, देखो, हो सकता है ना कि बाद में उनको रिग्रेट हो सकता था, उनको बाद में सभी को अपने एक्स की याद तो आती होगी, है ना? ये देखो, ये कनेक्शन है। दिस इज द काइंड ऑफ कनेक्शन आई एम ट्राइंग टू हैव, राइट? सो उनका एक्स, उनका बैंक, राइट? तो उनको ये लग सकता था ना कि प्यास जिस नहर से टकराई, निदा फाजली, किसी कोई जानते हैं निदा फाजली को? निदा फाजली साहब बहुत ही पॉपुलर शायर हैं, सुना करो, देखा करो उनको, है ना? तो उनका एक शेर है कि प्यास जिस नहर से टकराई वो बंजर निकली, प्यास जिस नहर से टकराई वो बंजर निकली, जिसको पीछे कहीं छोड़ आए वो दरिया होगा। ये इस तरह का ये एक अफसोस हो सकता था कि यार वो बैंक ही ठीक था मेरा, बट नो, दैट डजंट हैपन। You're getting my point or not?
तो उनको इस सर्विस में आपको नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन दैट यू विल गेट। नेक्स्ट मैं एग्जांपल इसमें आप लोगों को बताऊंगा, वो है आर्मस्ट्रांग पामे का। आर्मस्ट्रांग पामे किसी ने सुना है उनका नाम? ही इज नोन एज द मिरेकल मैन ऑफ मणिपुर। यू हैव हर्ड अबाउट हिम? He has constructed 100-kilometer road. 100-kilometer road he has constructed where? In Manipur. That was non-motorable. और उस डिस्ट्रिक्ट में वो 100, और वो भी क्राउड फंडिंग कराया उन्होंने। He didn't use this government fund or something. क्राउड फंडिंग उनने कराया, उनको 50 लाख रुपए मिल भी गए और उसके थ्रू वो रोड उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया पीपल के लिए, लोगों के लिए। सो सच इज द इंटेंसिटी ऑफ वर्क और ग्रेविटी ऑफ वर्क यू कैन परस्यू इन दिस करियर, इन दिस सर्विसेज। यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ जी, द बैक बेंचर्स, व्हाट्स हैपनिंग देयर? All right. So next, I'll quote the example of our अजीत डोवाल साहब, है ना? सुना है आप लोगों ने? हाँ, उनको सब लोग जानते हैं, अजीत डोवाल साहब। He has done so much for the country. Anyone can guess his age? Yes. Wow, nice. He is 80 plus and still serving. उनके काम जब आप सुनोगे ना, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को उनने खत्म किया, पंजाब इंसर्जेंसी में उनने काम किया, जम्मू एंड कश्मीर में जब 1996 में पहली बार इलेक्शंस हो रहे थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, IC 814 जब हमारा हाईजेक हुआ था उसमें उनका पार्टिसिपेशन था, रोल था। यू आर ऑल गेटिंग द काइंड ऑफ वर्क। एंड अभी जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार में आया है तब से ही इज सर्विंग एज NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही कि उनको वो रिटायर कराएं, उनके पास दूसरे ऑल्टरनेटिव नहीं दिख रहे हैं। एंड ही डजंट लुक लाइक 80। द काइंड ऑफ एक्टिवनेस दैट ही शोज इन पब्लिक लाइफ, दैट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। डोंट यू थिंक सो? अग्री और नॉट? राइट? So this is the kind of, you know, or the level of work or diversification of the work that you will get to do while you are into the services. और नहीं तो फिर बाहर से क्या है, हम लोग बाहर से बैठ करके गाली तो दे ही सकते हैं, ठीक है, कि अरे यार नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, तो पंजाब में अभी टेररिज्म है, खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, बाकी सारी चीजें हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं। और इंजीनियर से मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं, बिकॉज हम लोग जब बैठते हैं रात में तो हम लोग गली के, गांव के गली के एक नाले से बात शुरू होती है, वहां से पहुंचता है बेटा, बेटा से फिर स्टेट कैपिटल पटना नियर बाई, पटना से हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली से वो साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक होते हुए, PMO होते हुए, पार्लियामेंट होते हुए प्रेसिडेंट्स हाउस, और प्रेसिडेंट्स रेसिडेंट्स के बाद हम लोग कहां जाते हैं, सीधा अमेरिका पहुंचते हैं वाया दुबई, इंग्लैंड। वहां से नासा पहुंचते हैं, नासा का एक कोई स्पेसक्राफ्ट लेकर के हम लोग जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स के रिंग्स हैं, मून्स हैं, सबके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, वो भी एक रात में। दिस इज पॉसिबल ओनली विद हु? द इंजीनियर्स। नन other graduation, you know, discipline have this skill. Except engineers, no one is empowered to do so. तो बातें कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में कैसे खत्म होगा इंसर्जेंसी और बाकी सारी चीजें कैसे होंगी। जब आप सर्विसेज में आओगे, आप इसमें काम करोगे, उसके ऊपर काम करोगे। CM will ask you for your opinion. आपके ओपिनियन मैटर करेंगे when you will go and serve over there. You are getting my point or not, everyone? So this is the next thing that I wanted to say. Now, what are the myths? What are the myths of UPSC preparation or about UPSC preparation? जब मैं ये लिस्ट बना रहा था, मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि क्या क्या मिथ्स हो सकते हैं। कुछ कुछ इसमें से मिथ्स थे
जो मुझे लगा कि मतलब ये क्या बात हुई, ये तो ठीक है, जहां जा रहा हूं वहां के लिए तो ये ठीक है. फॉर इंस्टेंस द फर्स्ट वन वाज यू हैव टू बी जीनियस टू प्रिपेयर फॉर IAS एग्जामिनेशन. यहां पे सारे जीनियस बैठे हुए हैं. An IIT, an engineer, not from IIT.